Good morning, students. We are reading an important chapter, chapter 15, that is uh, reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. So, in my first video, I sent you the first portion of this chapter. So, let us have another important topic, the reproductive phase in human beings. The reproductive phase in human beings. Okay, so we have learned much about reproduction in chapter 14 itself. So what are the actually reproductive cells? Reproductive cells are the testes and ovaries. Okay, testes and ovaries contain the reproductive cells. Testes produce sperms, that is the human male gamete. Sperms are the male gametes, and ovaries produced ovum, which are the female gametes. Okay, so that we have. And when there is fertilization, yani fusion of sperm and ovum take place, then a zygote is produced. Zygote, that is single cell baby, is produced. But what happens if there is no fertilization? Okay, so regarding that, mainly it is dealt with. Now, if there is no fertilization, then what will happen to the ovum? So देखो, humans become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. Okay, you can a human will be capable to reproduce only when their testes and ovaries begin to produce gametes, that is sperms and ova. The male the males produce gametes over a longer duration in their life as compared to females. Okay, males can produce gametes um, um, up to more age than the females. So in females, the ovaries become active when the girl reaches puberty, or in female, the ovaries become active when puberty stage is reached. That is the stage of reproduction. This is normally between 11 to 13 years of age in case of girls. One ovum, one ovum in one of the ovaries, one ovum in one of the ovaries become mature once in about 28 days. So one ovum, एक तो ovum in one of the ovaries become mature once in about 28 days. है ना, 28 days में एक ही ओवम बनता है. दो ओवारीज है, लेकिन ओवारीज ऑल्टरनेट वे में ओवम प्रोड्यूस करता है. एक महीना एक ओवारी से एक ओवम निकलेगा, दूसरा महीना में दूसरा ओवारी से और एक ओवम निकलेगा. ठीक है. So one ovum in one of the ovaries become mature once in about 28 days. The mature ovum enters the oviduct. Mature ovum, अगर mature ovum enters the oviduct, oviduct में fertilization होता है, तो सोचो कि there is no sperm. So the only mature ovum will enter the oviduct where it may get fertilized. है ना, मे फर्टिलाइज, अगर स्पर्म जाए तो फर्टिलाइज होगा, नहीं जाएगा तो फर्टिलाइज नहीं हो जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड. इफ फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइज्ड होगा, इट डेवलप्स एंड रीचेस द यूटरस एंड ए पेयर सेपरेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द ओवरीज. सो इफ फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो जाइगोट बन जाएगा, बेबी बन गया. सोचो, इट डेवलप्स, बड़ा होगा, रिचेस द यूटरस, यूटरस में पहुंचेगा, विच इज ए पेयर सेपरेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द ओवरीज. बिटवीन द ओवरीज इट इज पेयर सेपरेट, है ना. और यूटरस इज मस्कुलर. यूटरस के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, राइट अबाउट यूटरस, यहाँ से लिखोगे. यूटरस इज ए मस्कुलर एंड इलास्टिक and can grow, stretch and expand many times its size when the fetus grows and develops inside it. Okay, fetus takes birth as the newborn baby. तो fetus का development कहाँ होता है? यूटरस में होता है. Before the embryo enters the uterus, और embryos of uterus में, है ना, before embryo enters the uterus prepares itself. एम्ब्रियो पहुंचने से पहले ही यूटरस पूरा पूरा तैयारी ले लेता है ना. ब्लड वेसल्स, एक थीन थिक ब्लड लेयर यूटरस के चारों तरफ बना लेता है, जिसमें खाना पीना सप्लाई करेगा. किसको? एम्ब्रियो को. बिफोर द एम्ब्रियो एंटर्स द यूटरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द एम्ब्रियो बाय फॉर्मिंग ए थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल. इफ फर्टिलाइज्ड, है ना, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, तो जाइगोट अगर फर्टिलाइज्ड हो जाए तो जाइगोट चला जाएगा यूटरस में, बढ़ते रहेगा, वहां पर फीटस का जन्म ले लेगा. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन व्हाट विल हैपन टू द ओवम? देन द एग डिसइंटीग्रेट, यानी ओवम विल डिसइंटीग्रेट, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा. एंड द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज शेड ऑफ, और यूटरस का जो इनर लाइनिंग है ना, ब्लड वेसल बना है, दैट विल आल्सो शेड ऑफ, मतलब वो निकल जाएगा, है ना. दैट ब्लड विल नॉट बी डिपॉजिटेड ओवर, रिमेन. Blood will has to go out along with the disintegrated ovum. This process of blood flow is termed as menstruation. इसको कहा जाता है menstruation, which take place once in 28 days. It lasts for 3 to 6 days. menstruation होगा, है ना. That blood will go out for
week, almost a week. The first menstrual flow that begins in a girl at puberty is termed menarche, or first menstruation जो होगा that will be called menarche. The menstrual cycle stops when the woman reaches 45 to 50 years of age. अब last menstruation को बोलेंगे क्या, the menopause. Okay, up to 45 to 50 years, this is termed the menopause. In general, menstruation occurs regularly at intervals of 20 to 28 to 30 days, है ना, हर महीना, every month, in between 28 to 30 days there will be one menstrual cycle, yani throwing out of the blood, and along with the disintegrated ovum. However, this period can be variable. It may take about 6 months to 1 year for girls menstruation period to become regular होने में 6 महीना से 1 साल भी लग सकता है. Normally this should not cause any worry. ये कोई घबराने की बात नहीं है. It is not a case of worry. तो हम सब देखे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा, है ना, यूट्रस में वो पलेगा, बड़ा होगा, फिटस होगा, जन्म ले लेगा. अगर जाइगोट नहीं बना तब तो ओवम आ जाएगा यूट्रस में अकेला, यूट्रस में आकर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, है ना, वो खत्म हो जाएगा. तो दैट disintegrated ovum plus uterine wall, and along with blood, uterine wall with the blood will come out. So that coming out of the blood is called the first starting is the menarche, and last menstrual cycle is called the menopause. Okay, if the ovum if the ovum is fertilized by the sperm, zygote is formed that begins to divide and gets embedded in the uterus for further development. और अगर fertilize होगा तब तो zygote बनेगा, and you have learned about this in the previous chapter. तो हम सब zygote बनेगा, zygote the division, cell division take place, and number of cells increase, so it changes into embryo further increases, developing organs or body parts, that is called fetus, full developed fetus takes place. तो ये सारे, है ना, your zygote cell embryo and fetus development take place in the uterus. ठीक है, यूट्रस से ही मदर से खाना पीना सब मिलता है. So let us stop it here.